लेवल 2 के लिए दैट वी कैन स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग IBC structure में what I'll be doing is, say for example I am writing one question over there. Just a minute. For example honest एक second just लिंक नहीं मिल रहा है क्या इनको? जस्ट एक बार चेक करो वो मैंने व्हाट्सएप पे जो लिंक भेजा है वो वर्क कर रहा है क्या जूम के लिए? 3 बार शेयर स्क्रीन है। हाँ आई थिंक इट इज वर्किंग ठीक है ओके ऑफलाइन में है तो दे कैन जस्ट डिस्कनेक्ट ऑफलाइन जस्ट डिस्कनेक्ट Raj able to hear my voice? Yes, sir. Okay. चलेगा दो बार किया हाँ बस बस हो गया
लेवल 2 के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन व्हाट इज ट्रेड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको आईबीसी स्ट्रक्चर में आपको फॉलो करके वो आंसर्स लिखने हैं। वी विल स्टार्ट इन द ग्रुप ओनली। जिसका आंसर सबसे मुझे लगेगा बेस्ट है, आई विल बी पिंगिंग देम एंड अकॉर्डिंगली द रेस्ट कैन फॉलो। आईबीसी स्ट्रक्चर याद है सबको? व्हाट वाज दैट? Introduction, body, conclusion. The introduction will be like just little bit of definition, then explanation. अगर examples है तो ठीक है, अगर नहीं है तो you can conclude it. बहुत बड़ा मत लिखना, but start with at least 5 to 6 sentences या 7 to 8 max. ठीक है, क्योंकि I think level 2 ऐसा है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस इस हिसाब से we will rotate. Chances are that कि ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, not in the mocks. मॉक्स के पर्सपेक्टिव से मत इनको फोकस में रखना, बट जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इन दिस वे, ठीक है। अभी हमारा कौन सा रिकंसिलिएशन है? कोलैटरल, दोनों बाकी है ना। लेट्स टेक कोलैटरल। Markets are down today. Any reason? कोई न्यूज आया है क्या? कोई समथिंग? मतलब सुबह गैप अप ओपन करो, फिर जितना गैप अप किया उतना ही नीचे लेके आ जाओ, फिर पूरा दिन एक रेंज में खेलो और 2 बजे जब एफआई जाए सब बेच के निकल जाओ। कितने दिनों से ये सेम स्टोरी चल रही है। किसी ने देखा वो आईपीओ एनालिसिस एलआईसी का? पोस्टेड द लिंक। बहुत सारा कुछ पोस्ट कर दिया था कल, तो रिजल्ट्स डे था ऐसा। टाटा स्टील का स्प्लिट हो रहा है 1:10 वाला, और ऊपर से 51 रुपीज का डिविडेंड। इट्स वेरी गुड। 10 मतलब अब उसका प्राइस ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 1300 के आसपास चल रहा है, तो 130, ठीक है। और वापस जब फ्यूचर में 1000 क्रॉस करेगा, इट विल बी सीरियसली बहुत वैल्यूएशन अच्छा रहेगा उस टाइम पे। 130 को मिल रहा है अगर टाटा स्टील, यू शुड ग्रैब इट। मेरा व्यू तो यही रहेगा। व्हाई? बिकॉज लाइक जितने भी स्टील के सेक्टर्स हैं, मतलब टॉप 5 में ये है, जिंदाल है, जेएसडब्ल्यू, थर्ड इज हिंडाल्को, फोर्थ इज दैट वेदांता, वेदांता या, एंड फिफ्थ इज सेल, ठीक है। मोर और लेस लाइक सब मतलब बड़े प्लेयर्स में तो यही लोग हैं, तो इनका एटलीस्ट टॉप 5 में अच्छा रहता है इनका एक्यूमुलेशन। टाटा स्टील एटलीस्ट कंसिडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द फ्यूचर जो भी होगा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क बेटर, ठीक है। बहुत सारी, अभी तो एक मेट्रो आ रही है, अभी तो कितनी मेट्रो लानी है, कितना स्टील चाहिए होगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। बहुत सारे डैम्स, ब्रिजेस, वो सब तो अलग है, वी आर नॉट काउंटिंग अपॉन दैट। ऊपर से इतने फ्लाईओवर्स हर एक जगह पे, ठीक है। तो एवरीवेयर यू विल नीड सीमेंट एंड स्टील आर द रॉ इंग्रेडिएंट्स फॉर एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। सीमेंट का भी इतना नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, स्टील इज मूविंग वेरी गुड इन दैट केस। चलो, so what is collateral? Can anyone explain? थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया हुआ है क्लास में, अकाउंट्स वाले जो भी है। So of course it is an age concept in the finance industry, which means providing security in the forms of property, cash, gold and securities against the possible payment default. In the case if you are not able to make the payments for whichever liabilities or the loans you have taken, your mortgage, property, gold, cash, any other assets will get lost. In that case, ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर किसी को आप इंटरव्यू में भी समझाना है तो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इन दिस लेमन लैंग्वेज आल्सो। नेसेसरी नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड कोई ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज ही बोलो, ठीक है। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दैट इट इज मींस थ्रू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। Salient features are, of course, it acts as a guarantee. So it is used as a guarantee that the obliged cash will be paid at the predefined time. Credit enrichment, it helps the banking firms to mitigate the credit risk. And third, the managing the other crisis. It helps to manage and overcome the crisis like economic, currency or failure of the
market participants. So just at what is collateral, one, and features of collateral, most important. Collateral will be one of the important chapters in the interviews. And what are the salient features? Salient features here. Guarantee, credit enhancement, and managing crisis. Okay. What is the purpose of collateral? Of course, the very basic purpose of requiring a collateral is to overcome the risk factors, credit risk of any of the borrower who is taking the loan, or whosoever is in the transaction who is borrowing any of the money market or financial instruments. The other lender has to ensure that he will be getting back his either money, cash, or any other securities in given time frame. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल के बाद उससे वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज वापस आ जानी चाहिए. That is the ultimate objective. If he is not getting it, he needs to have those collateral so that in the future, if the other party gets default, he can sell that particular securities. ऐसा हमने कहाँ पे देखा था लेवल 1 में? No. Repurchase agreement, if you remember, repo agreements, right? तो वो मतलब जो सेलर जो सिक्योरिटीज लेंड करता था बायर को, in the case if he is not able to repay it, that particular obligation, buyer has the rights to get their securities, correct? So that over there also that is acting as a collateral, that securities. Okay, so credit enhancement technique allows a net borrower to receive better borrowing rates or haircuts. Haircut margin वहाँ पे हमने देखा था. A credit risk mitigation tool for private and OTC transactions, which will offset all the risk that the counterparty will default on the deal obligations. A trade facilitation tool, that is fine. A money market in okay, yeah, a money market investment lending for short periods to earn interest on available cash as a balance sheet management technique, which is used to optimize bank capital by earning extra income from lending excess assets to other institutions in need of additional assets. So like how this is being used, it is even an arbitrage opportunity through the use of tri-party collateral transactions, and also tri-party collateral or tri-party repo service will also be working over here for collateral purpose for majority of the block dealers to their clients. That is, it will basically help ये client लिख लो to manage and overcome the crisis like economic, currency, or failure of the market participants. It basically helps to manage and overcome the crisis like economic, currency, or failure of the market participants. Why it has gained focus? Of course, collateral management will come to the fore as an important method of mitigating counterparty credit risk, one of the major factors in the aftermath of any of the financial crisis and the bankruptcy. मतलब जब ये हमने ये केस देखा था, right? Lehman Brothers bankruptcy crisis of 2008. In that case, अगर collateral तो बहुत सारे आ गए थे, फिर वो mortgage backed securities में convert किया, वो securitization किया, bubble फूट गया, लेकिन Lehman Brothers were not able to sell the securities considering such a huge price hike. Right? Remember that story of Lehman Brothers 2008 financial crisis, right? We have discussed the case. So collateral management provides the tools you need to gain a clear picture of your firm exposure, mitigate risk more effectively, and also optimize your collateral across multiple products. Okay, the other instruments that will be where this particular can be used are repos, tri-party multilateral collaterals, collateral outsourcing, collateral arbitrage, and collateral tax treatment, cross-border collateralization, credit risk, counterparty credit limits, and enhanced legal protections. Now, these are all the different transactions where collaterals will be used. Transactions can be a repo agreement, or transaction can be a normal bilateral or multilateral financial agreements, or it can be collateral tax treatment also. Now, there are different ways where all these particular things can be used. It's not necessary that collateral cannot be used only for one particular purpose. Okay. Basically, I think इसका importance तब बढ़ गया जब वो लेमन क्राइसिस का हुआ 2008 में. Otherwise तब तक चलता रहता था.
ठीक है. I think even in that sometimes I don't know, like in local newspapers you are getting that particular information or not. Banks का बहुत सारा एक न्यूज़पेपर में वो आ जाता है, वो जिसको क्या बोलते हैं, this what is that word for that, whenever any party is not able to repay the loans or housing loans, then उनका पूरा हाउस वो नीलामी कर देते हैं वगैरह वगैरह टाइप्स. Have you seen that anywhere? ऑक्शन, हाँ, टेंडर ऑप्शंस, हाँ, ऑफलाइन ही रहता है वो. न्यूज़पेपर में पूरा हेडलाइन, ये प्रॉपर्टी है, ये इतना प्राइस है, ये है वो, इफ यू वांट टू बिड फॉर इट यू कैन गो फॉर इट. नाउ दैट इज अ कोलैटरल provided by that borrower to the bank. In the case of the default, the bank then seizes that particular property and takes into the auction. Okay, so you can just go through this particular case of Lehman crisis once again. Just have any YouTube video over there, if anyone is having it, just share in the group. That will be having a better clear idea. Collateralization has always been important in OTC transactions specifically. Why? Because you don't know how much trustworthy the other party is. ठीक है, आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि ठीक है मैं आपको सिक्योरिटीज ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो भी है, लेकिन जब तक यू आर नॉट, फोन बजा, ओके, एनीवन इज नॉट able to gain the trust unless and until that particular, आप जब तक उनके साथ या तो ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हो या पर्सनली यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, it is very difficult for any borrower or lender to understand the counterparty nature. You don't know whether this party is going to get defaulted or he's going to make all the timely payments or not. This is the purpose that why collateral has been important in OTC derivatives, not on exchange. Why? If I say the question why collateral is important in OTC derivatives and not on exchange derivatives. Exchange, you get both the parties get premium. Both the parties Pay a certain amount of premium. no premium कहाँ पे कर रहे हैं? There are more chances to default on OTC. But why? That is the question. Because OTC market is not regularized by the government and exchange Exactly. is You don't have a regularized by the regulator government. or you don't have any custodian over there who is trying to protect your financial assets. ठीक है, आप डायरेक्टली फेस टू फेस मिल रहे हो, कितना भरोसा कर पाओगे? एक्सचेंज में कुछ गलती होता है, फॉर एग्जांपल मैंने टाटा स्टील का कुछ लिया आज फॉर एग्जांपल और टाटा स्टील बंद हो गया, देन सेबी इज देयर फॉर मी टू प्रोटेक्ट माय फाइनेंशियल एसेट्स और टू प्रोटेक्ट माय इन्वेस्टमेंट्स. लेकिन ओटीसी में क्या करोगे? Getting that point. So that is why it is important. Just write one particular sentence that collateral is important for OTC transactions and not for exchange transactions. Hello, sir. Yes. Sir, as you said, SEBI is there for our if their companies company अगर बंद पड़ता है तो आप आपने कहा कि SEBI है. Correct. Sir, लेकिन what about Syntax? Syntax. Yeah. So Syntax is getting delisted. Yes. So see, company if it is getting delisted, then there are other norms for that. Okay, and Okay. investors are already quite aware about such stocks, but still, if anyone is trading into those stocks, it is purely based on his or her risk. Okay, sir. Okay. या ठीक है, लेकिन हाँ ऑलरेडी इश्यू किया जाता है गाइडलाइंस वगैरह, मतलब या तो प्रेस आ जाता है रिलीज उनका, या तो नोटिस आ जाता है, या तो इन्वेस्टर से उनको भी एक ईमेल जाता है. डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आपने बहुत महंगा खरीदा हुआ है, आई डोंट थिंक सिंटेक्स हैज इवन क्रॉस 20 इन द रीसेंट टाइम्स. No, यही कुछ 7-8 रुपए था वो. हाँ, कितना है? यही कुछ 8 रुपए भी नहीं था शायद. या एग्जैक्टली, हाँ, तो 8 रुपए में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इतना नहीं होना चाहिए. सी देयर विल बी ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द पेनी स्टॉक्स. आप पेनी स्टॉक्स में तब जा रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो जब आपको पता है कि ये पैसा जो मैं डाल रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. अगर चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो आई डोंट केयर अबाउट इट. तो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि 5 to 10,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू शुड इन्वेस्ट, नॉट मोर देन दैट. अगर आज मैं सिंटेक्स की 1000 क्वांटिटीज लेता हूँ तो 8000 रुपए का हुआ स्टॉक्स, मतलब मेरा नेटवर्थ. बट इन दैट केस आई एम रेडी टू लूज दैट 8,000 रुपीज, तब जाके मैं पेनी स्टॉक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. अदरवाइज यू ऑलरेडी हैव गुड क्वालिटी कंपनीज. ठीक है. Yes, sir. Okay, sir. See, the figures of collateral have gradually increased prior to 2008 crisis. मतलब पहले सिर्फ $250 के collateral थे, धीरे धीरे करके वो 1329. Like everyone started to realize the importance of collateral, basically across the financial markets. Otherwise, earlier क्या होता था? Earlier एक और चीज होता था,
दिस फिगर हैज इवन इंक्रीज विद एन ऑब्जेक्टिव। पहले क्या होता था, अगर मैं 100 रुपए का चीज मतलब लोन बोरो कर रहा हूँ तो 50% का ही मुझे कोलेटरल देना है। फिर धीरे धीरे वो रेशियो बढ़ने लगा, फिर 60% आया, 75 आया, 90 आया, अब तो पूरा जितना अपफ्रंट मार्जिन है जितना है वो पूरा का पूरा कोलेटरल दे दो। बिकॉज इफ टुमारो द प्राइसेस ऑफ दिस एसेट्स व्हिच हैज सरेंडर्ड एज कोलेटरल, अगर उनका कुछ नेगेटिव हो गया, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ट्रैक बैक देयर लायबिलिटीज और एसेट्स रादर। बैंक ने अगर लोन दिया है 100 रुपए का कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को बोला था पहले कि सिर्फ 50 रुपीज का कोलेटरल दो, चलो ओके नो इश्यू। कस्टमर डिफॉल्ट हो गया तो लॉस किसका हुआ, बैंक का, 50 रुपीज का। फिर बैंक को लगा नहीं यार, वी नीड टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर कोलेटरल अमाउंट, तो 50 रुपए से बढ़ाकर वो किया पहले 60 रुपीज, फिर किया 75, फिर तो 100 अभी चल रहा है पूरा। जितना अमाउंट आप ले रहे हो लोन में, सेम अमाउंट ऑफ कोलेटरल हैज टू बी डिपॉजिटेड, सो दैट अगर कल कस्टमर डिफॉल्ट हो जाता है तो 100 रुपए वो मतलब निकल गया तो कोलेटरल का 100 रुपए से वो रिकवर कर सकता है। क्लियर? What if collateral prices also goes down and the banking? तो फॉर दिस रीजन, इसलिए शायद हमने एक एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर वी हैव डिस्कस्ड इट और नॉट, प्रोबेबली यस, गोल्ड लोन जो लेते हैं उस केस में दे ऑलरेडी फर्स्ट डीवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गोल्ड। अगर अभी 50,000 चल रहा है तो वो 70% का ही वैल्यूएशन लगाते हैं, 35,000 के हिसाब से दे विल कंसीडर द प्राइस ऑफ गोल्ड, और उसके ऊपर फिर आप जितना गोल्ड जमा कराते हो, से फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स विल बी काउंटेड इन द प्राइस ऑफ 35,000। ओके, तो बहुत बड़ा वो ऑलरेडी वो हेयरकट मार्जिन पहले से ही रख रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन दैट वी ऑलरेडी हैव 2 स्टेप हेयरकट मार्जिन इन दैट रेपो एग्रीमेंट्स। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू फिर पहले डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद एडिशनल हेयरकट मार्जिन, सो दैट इज लाइक अ 2 स्टेज कोलेटरल अप्लाइंग ओवर देयर। ठीक है, तो पहले से ही वो मतलब सी इवन इन दैट केस अगर आप बैंक से हाउसिंग लोन भी लेते हो तो उसका वैल्यूअर आता है वैल्यूएशन करने के लिए, फॉर दैट एनी गिवन प्रॉपर्टी इफ एनीवन इज अवेयर अबाउट, वो घर के फोटो खींचेगा, फिर अपना वो दैट मैप देखेगा, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी डन। ओके, इन दैट प्रोसेस आफ्टरवर्ड्स वंस ऑल दिस थिंग्स आर डन, वो फिर मार्केट के हिसाब से जो रेट्स चल रहे हैं उसमें भी वो कम करेगा। से फॉर एग्जांपल एनी 2 BHK फ्लैट अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो वो ऑलरेडी पहले 3,000 के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइसेस उतने ही है, बट पहले से उसका वैल्यूएशन कम रहेगा, सो दैट बैंक्स आर एट लोअर रिस्क इन दिस स्टेज। ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ द आई थिंक बैंक्स, वरना कल ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत भगा दिए, लोन्स वगैरह ले लिए सबने, और ऑल ऑफ ए सडन रियल एस्टेट मार्केट का प्राइस क्रैश हुआ। अब लोन्स तो बहुत ऊंचे दाम पे लिए हैं ना सबने। ओके, नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब लोगों की उतनी डिस्पोजेबल इनकम तो है नहीं कि इतना EMI पे कर पाएंगे एक साथ, और उनको रीसेल करना है प्रॉपर्टी तो बिका नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि 90 लाख में लिया था तो 50 लाख में भी नहीं सेल हो रहा है, तो 40 लाख का तो ऐसे ही वैल्यूएशन का गैप हो गया। तो द सेम थिंग हैज हैपेंड इन द केस ऑफ लेमन ब्रदर्स, बलून बना देते हैं और बलून फूट जाता है और बाद में कुछ बचता नहीं है, तो फाइनेंशियल सिस्टम्स आर गोइंग टू बी ब्लेम्ड एट द एंड। So this is very much difficult for any institutions to track this particular thing. Okay, this is why collateral importance has increased in the recent times, and not just one case. You will find multiple case studies for this. Just write one assignment. Identify a collateral crisis case of domestic and international level. Tata Steel, despite having good results, देखा कैसा मैनिपुलेट किया हुआ है? Anyone has tracked today's Tata Steel? Yesterday results तो बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। हाँ, ऊपर हाई कितना गया था वो देखो आज, हाई से कहाँ से उसको मैनिपुलेट कर दिया है। अब एक्चुअली ज्यादातर रिटेलर्स क्या करेंगे, खुलते ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 9:15 जैसे स्ट्राइक होता है कोई भी प्राइस का, दे विल स्टार्ट बाइंग द कॉल ऑप्शन। दिक्कत ये होगा कि
2 मिनट में वो ऐसा कैंडल बना देंगे, तो दैट इज एक्चुअली नोन एज द बाम्बू कैंडल. बाम्बू कैंडल इज लाइक अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेचड कैंडल, और उसमें बहुत सेलर्स रहता है, तो एक साथ वो कम से कम 30-35 रुपए निकाल देता है. एंड इट इज देन वेरी मच डिफिकल्ट फॉर रिटेलर्स अनलेस एंड अनटिल कोई कूल प्लेयर आना चाहिए मार्केट में वापस. Okay, so this is like few examples of the collateral landscape post 2008. ग्रॉस इतना डिस्पर्स किया था, लेकिन कोलेटरल इतना ही लिया है. Financial stability, these are some of the examples of how much volatile was the markets and how much collateral amount was being surrendered. ठीक है. Now the various markets where collateral will be used are fixed income repo, corporate bonds, exchange traded securities, asset backed securities, OTC derivatives, equities, bank loans, security lending, FX margin and commodities. Just write it down where collaterals are used. Now these are the different financial instruments. At least जब आप आंसर बोलो तो ये 3 से 4 नाम तो आपको याद होने चाहिए. These are very basics. Okay. Important where collaterals are being used in the different financial market or instruments. Different markets or different financial instruments where collaterals will be used. So question can be directly what is collateral, why it is important, and where which different markets you will find collateral. ठीक है, अगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस है तो इस हिसाब से रहेंगे. Now this is one of the examples where collateral is used in a swap agreement. ठीक है, for example bank A is having a profit versus bank B in a swap. So bank B definitely will be on a loss, either of one party has to be in loss in a swap agreement, that we already know. Profit bank A has on the swap leads to a credit exposure on bank B. Now to mitigate the risk of bank B defaulting and bank A losing out the profits, bank A will perform a collateral call on bank A. ठीक है, तो बैंक B इसमें क्या होगा, just a minute. हाँ, the party with the MTM loss provides collateral to the party with the MTM profit. The process is repeated daily and the posted collateral changes with the value of the trades. तो बैंक के प्रॉफिट में था, बैंक बी लॉस में था. Now bank B has to provide certain collateral in the case if it is getting defaulted, but on the other hand whatever profit has been performed by bank A, now in the transactions they will try to mitigate that risk to such an extent कि bank B का पहले तो loss बंद हो जाए. Why? Because both the entities are banks basically first of all, and no one will wish कि कोई बैंक बंद हो जाए या डिफॉल्ट हो जाए. ठीक है, तो बैंक बी क्या करे, बैंक ए will support bank B in that case and will try to either lower the amount of collateral, one, or second it can reverse, या तो कोई एक दूसरा swap agreement करेंगे जहां पे at least बैंक ए के profits will not get disturbed but बैंक B will not lose further. ठीक है, वो constant हो जाता है लॉस उनका, या तो फिक्स्ड हो जाता है, उससे आगे एक पर्टिकुलर लॉस उनका नहीं होगा. ठीक है, collateral landscape. Collateral markets across various countries have a wide range of products and securities they can accept. US and Canada have developed collateral markets focused on cash and treasury bonds
and Europe has highly efficient fixed income collateralization, fragmented equity markets, and historically fragmented settlement and clearing infrastructure. Europe has fragmented tax system, legal system, and variations. So every country, every nation, or every geographical region have their own collateral systems, which they are using or implementing for carrying out transactions into different financial instruments. So US और Canada है, तो they are focusing more collateral on cash and treasury bonds. जब transactions आते हैं तो वहां पे उनका collateral ज्यादा है. अगर यूरोप है तो उनका आता है इक्विटी मार्केट्स, settlements and clearing infrastructure, basically again related to bonds, and Europe is related to tax systems or any other legal systems and variations in the collateral treatment. Why? Because even from the accounting perspective, sometimes it is difficult to provide that effect into the collateral system, okay, due to different tax structure या जो भी है. Middle East has a rapidly developing collateral market in a form which is acceptable under Sharia or Islamic law. ये पता है इस्लामिक बैंक होती है किसी को? तो वो नहीं पता है. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इस्लामिक बैंक्स. मतलब मिडिल ईस्ट के है स्पेसिफिकली, एंड दे आर नो, इंडिया में शायद नहीं है, वहां पे है आई थिंक सो. अदानी विलमार की भी आज हालत खराब है. रिजल्ट्स अच्छे थे कि पुअर थे? आई विल चेक दैट. Valuation is more than actual. यस, मार्केट कैप. Market cap. I'm not of you. Like 100. मार्केट कैप इज टॉकिंग अबाउट. ब्रिटानिया. केमिकल सेक्टर में कुछ तो आ रहा है, बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स आर रनिंग. टाटा केमिकल हो या सुमितोमो केमिकल, पेट्रो एग्जैक्टली, बट दिस इज रनिंग आउट. Even that NLC India, I think मैंने पोस्ट किया था कि नहीं किया था पता नहीं. NLC India नहीं, क्यों टेक्सटाइल स्टॉक्स का कुछ तो लिखा था मैंने मेरे ख्याल से. Okay, so just check it out, that Islamic banking and Islamic banking laws. ठीक है. Now in Middle East, under Islamic banking law, most of the deals must be fully secured with collateral to ensure that no credit is extended between counterparties. That is one of the basic laws. Latin America has developed its own collateral market, but is hindered by inefficient legal systems, underdeveloped custody and IT systems, and access to quality collateral. हाँ, quality of the collateral is also equally important. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 लाख का लोन लिया है और collateral जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन 10,000 भी ना. People do sometimes do such manipulations in the market. I think in the case of this Vijay Mallya only, जितना लोन लिया था, जो collateral provide किया था, that was a total mismatch over there, and that is why Punjab National Bank suffered a huge loss. Okay, अब 10,000 CR का लोन ले रहे हो और collateral दिया हुआ है, that is fine, but his assets are maximum net worth to 3 to 4,000 CR only. तो बाकी का 6,000 CR कहाँ से लाओगे? अब यहाँ पे होता है political fixtures, otherwise this is not possible. ठीक है. Of course corruptions will be there, otherwise 10,000 CR का disbursement भी नहीं होता इतना easily. Asia is a mix of rapid development. ठीक है, वो fine है. Key technicals and legal developments. There are electronic data interchange standards developed to automate all the collateral transactions and communications. There are standards defined for eligible collaterals. Then there are even collateral management techniques developed for managing portfolio, customer information, and enterprise-wide basis. Now, these are few of the technical and legal developments developed
आप इसमें से 2 या 3 कोई भी इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, अदरवाइज दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल होगा, बट अगेन दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स और बेस्ड ऑन द loopholes in the legal systems, the government will keep on changing these laws and norms. Okay, now who are the parties of the collateral management? That is important. Credit analysis team, basically more of like a team of the CRISIL या CARE, जो वो रेटिंग देते हैं, कोलेटरल का भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं है. सो रिसर्च इज एनालिसिस एंड सेट कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स for new and existing counterparties. Typically this entails a preliminary review as well as ongoing periodic reviews. Front end trading office में sales people develop trading relationships and manage the onboarding process for new accounts, including signing of legal collateral documents, account information and so on. Middle office में क्या होगा? Typically responsible for risk and valuation measures. Middle office will be interacting with the collateral management team on a daily basis. And last will be the legal department, which will be conducting negotiations, drafting and review of the agreements. This will be one of the roles if you are getting selected into the risk management profile of investment banking. ठीक है, so just do one thing, right? Who are the key participants of a collateral team? Okay, सिर्फ नाम लिख लो. Of course, the descriptions are basics, but you can just go through it in the later PDF message. क्रेडिट एनालिसिस टीम फ्रंट ट्रेडिंग ऑफिस में आपका क्या रोल रहेगा? मिडल ऑफिस, बैक ऑफिस नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दे आर मोर ऑफ इनटू दिस एडमिन रोल एंड दे कैन नॉट जज और कैरी आउट द रिस्क एनालिसिस ऑफ द कस्टमर्स और द क्लाइंट्स. ठीक है, तो बैक ऑफिस में ये नहीं आएगा. वैल्यूएशन टीम ऑफ कोर्स विल बी फोकसिंग ऑन वैल्यूइंग illiquid or exotic collateral and underlying trade position that must be collateralized. Accounting and finance team will be working with the middle office to calculate and account for the P&L on collateral posted. And third party service में कौन हो सकता है? Collateral management team will be performing calculations on the Excels and dedicated software, delivers and receives the collateral. जो भी collateral होगा उनका अगर valuation keeps on changing on a daily basis. क्यों? Sometimes certain clients must have even given their portfolio as a collateral. तो पोर्टफोलियो का तो डेटा हर रोज चेंज होता जाएगा, तो आपको उसको हर हिसाब से एवरीडे यू हैव टू पोस्ट इट. अब उसमें या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी है, इन दैट केस पर्टिकुलरली व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑप्शन? द बैक ऑफिस, बैक ऑफिस से मिडल ऑफिस हैज टू कीप themselves updated as well as the credit analysis team to be updated. Why? Because in the case अगर पोर्टफोलियो बहुत गिर रहा है due to certain reasons, तो जितना अमाउंट डिस्बर्स हुआ है या तो लायबिलिटी जितनी दी गई है, दैट नीड्स टू बी टैकल्ड एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम. 1 लाख का पोर्टफोलियो था, 1 लाख का लोन दिया क्लाइंट को, राइट? नाउ दैट पोर्टफोलियो इफ इट टर्न्स डाउन टू 50,000, व्हाट विल हैपन? या तो एडिशनल कैश उनको डिपॉजिट करना है, या तो तुरंत ही बाकी एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेमेंट हैज टू बी डन बैक टू द कंपनी बाय द क्लाइंट या बाय द बोरोवर. ठीक है, अदरवाइज वो फिर मिसमैनेज होता जाएगा. तो आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है, एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट फॉर ऑल योर क्लाइंट्स हु हैव सबमिटेड कोलैटरल्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ दैट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑफ कोलैटरल लुक्स लाइक. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोसेस होगा, अकाउंटिंग में जाएगा, सेटलमेंट होगा. कोलैटरल मैनेजमेंट विल बी सेंट्रली प्रोसेसिंग ओवर हियर. वैल्यूएशन जो पोर्शन बोलते हैं, एक्सपोजर अगर कोई है to different types of financial assets, then what are the major risk covered over there? Management reporting अलग होगा जो आप भेज रहे हो सीनियर मैनेजमेंट को. रेगुलेटरी रिपोर्टिंग as per the SEBI or the RBI norms, and client reporting of course as per his particular formats provided or not. क्या क्या होगा? प्रोडक्ट डेटा, मार्केट डेटा, लीगल एग्रीमेंट्स, क्लाइंट डेटा एंड करंट पोजीशंस. Okay, this is one of the important frameworks which will be required
to explain or to understand in the case of collateral management. ठीक है, just write down which are the risk factors associated with collateral, which are the risk factors associated with the collateral. तो ये जो 5 risk factors है, just write it down. Sir, can you repeat the question? Hello. Yes. Sir, can you repeat the question? Which are the risk factors associated with the collateral management? Okay, sir. Okay, thank you. डिक्सन में कोई नेगेटिव न्यूज़ है क्या? डिक्सन टेक्नोलॉजीज? कैंपस आईपीओ में किसी ने अप्लाई किया था क्या? जॉर्डन? हाँ, 3 अकाउंट से किया, एक आध भी लग गया तो अच्छा रहेगा। आई थिंक उसका अलॉटमेंट है आज। आज यू कैन चेक इट। और किसने किया? आपने किया? आपने भी किया। एलआईसी का जीएमपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉट ऑल ऑफ अ सडन। रेनबो किसी ने किया था? रेनबो तो नहीं किया होगा, आई डोंट थिंक सो।
कार्टरेट का भी आईपीओ क्रैश हो गया क्या? मतलब आईपीओ प्राइस से कार्टरेट now as a portfolio manager or investment banker, your important processes for collateral management will work like this. If you are a cash trader, portfolio managers will be connecting over here. There will be derivative traders who will be placing their trades into portfolio management and trading systems. Now collateral management will work like this. Inventory management and margin and collateral management. Margin and collateral क्या होगा? कितना extra money चाहिए so that जितना ये लोग माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, whatever the case has to be, against that the margin has to be maintained. Sometimes you can just even try into this. I think in Zerodha I have seen it. I don't know about Upstocks. कि अगर margin exceed होता है ना, तो automatically you will be getting one message or email. Margin has been exceeded by this. Please deposit money urgently करके आ जाता है एक message. हाँ देता है ना. हाँ. So this is the reason. Now this is how the collaterals are managed in a real time manner. Automatically आपका 100% utilization अगर 10,000 ही आपके अंदर है portfolio में, this cash reserves. But if you are trying to buy in an intraday basis in such a way कि वो 10,000 के लॉस के ऊपर जाने लगा है, तब जाके ऑटोमेटिकली वो मैसेज ट्रिगर होता है. तो here all those things will be implemented. There will be of course reference data management for checking which are the clients, कौन से आईडी से ट्रांजेक्शन हुआ है, किनको कोलेटरल का मैसेज भेजना है. Of course you need to follow the compliance measures and internal audit procedures for this. फिर जाके होगा रिपोर्टिंग. Fund account management में, internal audit में, risk management and legal compliance. So this is how your collateral will be functioning. Types of collaterals important. Cash, mortgage-backed securities. We have already seen letter of credit. Letter of credit शायद नहीं लिखा था हमने उसमें in transaction, right? Just write it letter of credit and also in the assignment write it what is letter of credit. ठीक है? What is letter of credit? So 10 में किसी ने मैसेज किया, अदानी विल्मा dislodges HUL from the position of India's largest FMCG company. दोनों के मार्केट कैप देख लेना एक बार, कितना चल रहा है दोनों. ओके, अमाउंट है, मतलब मैंने वो चेक नहीं किया है.
इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी टाटा स्टील इज नॉट मूविंग. लेटर ऑफ क्रेडिट एवरीवन रिटन. ठीक है, किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ बिजनेस है, दे विल कम टू नो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट specifically with external foreign entities. So collateral management we have seen is the technique which will be guiding the counterparty on the terms and aspects of collateral transactions to be undertaken. It defines granting, verifying and advising policies for the participants to lower the counterparty default risk. Basically, we have already seen capital adequacy. Yeah, write it. One more question. What is capital adequacy? What is capital adequacy ratio? What is capital adequacy and what is capital adequacy ratio? Okay. Write another assignment. What is asset liability management? Now, why in the banking industry we need collateral? We have already discussed one example, but still referring again. In the modern banking industry, with increased use of new technologies, competitive pressures in the institutional finance industry and heightening counterparty risk are faced in derivatives trading. So collateral management has become an integral part of these institutions, heightening the need for robust credit risk processes. Below mentioned a few of the reasons for exceeding need of such management. Why credit risk होगा तो क्या होगा, default हो जाएगा पहले तो सबसे बड़ा important fact. Second, reduction of exposure in order to do more business. If you want to expand your business, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि कोई भी काउंटर पार्टी या clients को आप लोन दे दोगे. You need to perform a credit check, carry out credit rating. Only then you will be able to providing required loans. Derivative exposure. Improvise market accessibility by collateralization of derivative securities. Increase possibility of doing risky exotic trades. जो ज्यादातर हम लोग आज देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में, या तो फिर आई थिंक इवन इन स्टॉक ऑप्शंस आल्सो पीपल आर डूइंग, क्या बोलते हैं, हैपहैज़र्डली वाला जो रिस्क रहता है ना, कुछ भी बिना देखे बिना समझे, दे विल बी स्टार्ट डिगिंग देमसेल्व्स इनटू इट. दैट इज वेरी वेरी नेगेटिव फॉर नॉट ओनली द क्लाइंट्स बट आल्सो फॉर द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम. बिना समझे कोई भी ऐसे नहीं करने चाहिए. ठीक है. Risk management, reduction in portfolio risk, capital adequacy and reduces operational risk. Capital adequacy we will see once you write that particular answer, we will discuss with example. Utilizing the balance sheet entities to maximize the firm's resources and access to further capital from lending excess of assets. Okay. Now what are the parties? We have already written this. Anyone missed any name? हमने उसमें से जो लिखा था, क्रेडिट टीम था, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, लीगल डिपार्टमेंट, वैल्यूएशन टीम, अकाउंटिंग टीम, थर्ड पार्टी सर्विस एंड कोलैटरल मैनेजमेंट. Establishment of collateral trade. Yeah, write down what is the process of establishing a collateral trade. What is the process of establishing a collateral trade? So you need to identify the new client. जब न्यू प्रोसेस आपको एस्टेब्लिश करनी है, उसका क्रेडिट एनालिसिस परफॉर्म करोगे. डज एनीवन हैव एनी आइडिया हाउ क्रेडिट एनालिसिस इज परफॉर्म? हमारा जो क्रेडिट स्कोर आता है, किसी को पता है? हमारा भी होता है इंडिविजुअल. कहाँ से पता चलता है? क्रिसिल.
वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते, नो योर क्रेडिट स्कोर, नो योर क्रेडिट स्कोर करके आता है, जस्ट चेक इट आउट वंस। ठीक है, पान कार्ड शायद नंबर पूछेंगे और तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर लाइबिलिटीज बहुत है, आई थिंक इट इज आउट ऑफ 800 और 900, और कम से कम आपका एवरेज स्कोर अच्छा होना चाहिए, अबव 600, अबव 700 तो विल बी वेरी गुड। कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, जैसे ही 600 के नीचे गया आपकी क्रेडिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, एंड दिस विल हैपन व्हेन यू गेट डिफॉल्टेड इवन इफ यू डोंट पे वन ईएमआई। अगर गलती से भी एक ईएमआई में कहीं पे इश्यू हो गया ना, तो समझ लो कि वो क्रेडिट स्कोर को बहुत इंपैक्ट करता है। ठीक है, so that is how you perform credit analysis. Third is agreeing to an appropriate agreement. So what are all the norms and conditions which will be mentioned in that agreement that both the parties have to manage? Type of agreement, duration कितना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है या कौन सी सिक्योरिटीज है, बेस करेंसी ऑफ कोर्स इंडियन रुपीस, डॉलर्स, पाउंड्स, टाइम ऑफ डिलीवरी, क्वांटिफिकेशन ऑफ कोलेटरल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट पेएबल इन दैट केस। फाइनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो along with my notional amount interest has to be paid. Okay, repo agreement if required, अगर repurchase agreement है तो we already aware about of level 1 transactions. ठीक है, now what process same, establish relationship, identify new client by sales team. ये प्योर ग्राउंड लेवल थियरीज है। ये न्यू क्लाइंट कौन फाइंड करता है, सेल्स टीम ही आपको देखे बोलेगा कि ये क्लाइंट है, उसके आगे का काम फिर आपको करना है। Negotiate with them and enter into a new collateral agreement, implement the new agreement, initialize the collateral which is exchanged, and front office begins the trade. Unless and until आप clearance नहीं दोगे तब तक front office will not start carrying out any transactions into the account of that client. ठीक है, okay. Now daily collateral operation processes क्या होता है, the collateral management team job is to continuously track, value, give and receive collateral during the life of every OTC trade in the institution's portfolio. They need to manage collateral movements by tracking the new month-to-month or mark-to-margin valuations, making and filling margin calls, and giving or taking collateral offset credit risk on a deal and net portfolio basis. So just highlight this one. What is or what are the daily important processes for the collateral management? मतलब आपका जो जॉब रोल होगा उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, then custody, clearing and settlement. As per the agreement, one or the counterparty may act as a custodian for cash and securities, or even a third party custodian can be there. It's not necessary कि हर बार external custodian होगा. You can even hire. It is essential to maintain separate accounts for collateral clients. The custodian will then manage all the collateral inflows and outflows. In that case, counterparty payments, interest calculations, haircut, dividend, coupon payments, as well as for accounting and reporting standards. So question ये हो सकता है यहाँ पे कि whether custodian or a third party custodian is allowed to interfere in the transactions of an investment banker or not. If yes, then what are the responsibilities performed by that custodian? Okay, so just highlight or write this: the role of custodian in a collateral management process. The role of a custodian in a collateral management process.
Now process in collateral management. First write it down the names, MTM changes, top up required and notice and legal action. What are margin calls? Write one question. What are margin calls in collateral management? What are margin calls in collateral management? Right? Now in this case, see what is MTM? We have seen mark to margin individualized entry के हिसाब से, if you remember, we were adjusting all the profit and loss in the level 1. ठीक है, तो ये चेंजेस भी इन लोगों को अपडेट करने पड़ेंगे. Why? Because in the case अगर वो benchmark level से लॉस नीचे चला गया on a daily basis, then that client needs to be informed कि एक्स्ट्रा पैसा जमा कराओ. Right? Transaction is yet not closed. 1 लाख का सिक्योरिटी लिया हुआ था, डेली मार्क टू मार्जिन पहले 10,000 प्रॉफिट, फिर वापस 20,000 का लॉस, फिर 30,000 का प्रॉफिट, फिर 40,000 का लॉस, ऐसे कर करके लास्ट में नेट इफेक्ट ये आया कि 50-60,000 का लॉस चल रहा है. ठीक है, वन थिंग. सेकंड थिंग क्या होगा उसमें, इन दैट पर्टिकुलर केस, then automatically a trigger has to be done in the system where client needs to be informed कि 50,000 का mark to margin हो गया है, now please deposit that extra amount of money. This is how that particular MTM will be working. So this is why it is written that maintaining MTM changes of portfolio in case the position has moved negatively for the borrower and which is below minimum amount. तो मतलब जो भी amount आप set करते हो, margin call issue तब होगा 50,000 के नीचे अगर चला जाता है तो you need to issue that particular margin call. Top up will be required. Top up क्या होता है? Extra amount that you are depositing against the collateral damage that has been done in the transaction. 50,000 का लॉस है, 50,000 का टॉप अप वापस डाल रहे हो. टॉप अप रिचार्ज आता है ना हमारा मोबाइल का. It is working like that only. Extra amount that you are putting over here will be getting deposited over here. And if the client is not meeting the margin requirements, the collateral team can issue a legal notice to halt all the trading relationships. अगर कुछ भी नहीं होता है, उसको legal notice आप दे सकते हो. ठीक है. Generally, the front office will offer all the counterparty the opportunity to cancel the agreement and pay a penalty only before full legal action is taken. This is a more of like an administrative thing. Okay. All right. Margin call mechanics procedure to same. ओके, चाहिए क्या? सब नींद में ऐसे ही सो रहे हैं सबके सब. Sometimes yeah, sometimes even I am confused कि इनको मतलब अभी लेवल 2 का इनका जल्दी खत्म हो जाए तो ये लोगों के लिए अच्छा है. बट एनीवेज आफ्टरवर्ड्स इसके बाद तो एक ही चैप्टर है आपका, कोलैटरल. ठीक है, सॉरी रिकंसिलिएशन. हाँ, और वो तो आप कर लोगे, अकाउंट्स वालों को तो मतलब आता ही होगा. ठीक है, द लेटर थिंग्स वी विल डिस्कस. और आई थिंक अगर आज नहीं तो कल से आई विल स्टार्ट पुटिंग दोस क्वेश्चंस ऑफ लेवल 2. एवरीवन हैज टू राइट इन द ग्रुप ओनली फॉलोइंग दैट आईबीसी स्ट्रक्चर. जिनको पता नहीं है तो एटलीस्ट वेट फॉर एनीवन. अगर जो मतलब थोड़ा बहुत जिनको आता है, जिनको समझ में आता है ये कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, व्हाटएवर. ओके, वेट फॉर दोस इनपुट्स एंड देन राइट योर आंसर. डायरेक्टली जंप अपॉन ऐसे ही मत कर देना. अगर सबका गलत हो रहा है देन आई विल प्रोवाइड यू वन एग्जांपल बाय राइटिंग द आंसर कि ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, बट लेट मी चेक कि आप कितना फॉलो कर रहे हो. अगर ये सिस्टम अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बट देन आई थिंक लेवल 2 we will be following the same approach for the rest of the month. Every day we will be posting questions, every day you will be writing answers, तो वो रिफ्रेश भी होता रहेगा. वन थिंग. सेकंड, जैसे ही लेवल 2 के मॉक्स हो जाते हैं, लेवल 1 के ऐसे क्वेश्चंस आई विल स्टार्ट टू राइट इट डाउन. क्वेश्चंस आपको वही आईबीसी स्ट्रक्चर वहां पे भी फॉलो करना है. ठीक है, एनी क्वेरीज इन दैट? आईबीसी किसी को नहीं समझ में आया या पता नहीं है क्या है? इंट्रोडक्शन तो आपका डेफिनेशन होगा of that concept which is mentioned.
फिर आता है बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट इज मोर ऑफ लाइक यू आर गिवन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कंसेप्ट. ठीक है, और डिटेल में. एंड कंक्लूजन, अगर एग्जांपल्स दे रहे हो तो ठीक है, otherwise you can just conclude it with single statement. This is how we are utilizing, or this is how we are using these financial instruments in the market. ठीक है, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है और कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. बट दिस पैटर्न विल एक्चुअली अलाउ टू रिमेन मोर ऑफ गिविंग स्ट्रक्चर्ड आंसर्स इन द इंटरव्यू. वो फिर अदरवाइज क्या लगेगा कि रैंडमली कुछ भी बोले जा रहे हैं, एक लाइन में खत्म कर रहे हैं. कई लोगों का ऐसा हुआ था इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज में, कि एक लाइन में आंसर इज कंप्लीटेड. ऐसा नहीं होता है. एटलीस्ट 2 to 3 sentences आर मिनिमम, 5 to 6 आर मैक्सिमम. दिस इज हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट. अब किसी एक का तो मैंने शायद वो क्या बोले, दिस इंटरव्यू हैड टेकन ऑफ अनदर बैच, उसको मैंने पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड दिस इक्विटी शेयर्स. कोई तो था सिंपल, उसने चारों चार प्रेफरेंस शेयर्स भी एक्सप्लेन कर दिया उसमें. देन आई हॉल्टेड हिम कि इतना भी डेप्थ में नहीं जाना है, डिफरेंस ही बताना था आपको, तो आपको चारों चार वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शंस. ओके, चलो, ओके, we will meet after some time. Online students, we are taking a break. Okay, sir. Yes, sir. Hello. हाँ sir. हाँ. Yes, sir. Yeah.
क्यों क्या हुआ? हाँ? 3 घंटे सोया तो मतलब समझ में नहीं आया इसका कॉलेज में पीपीटी और यहाँ पे सेशन रिलेशन. लेट्स सी जितना थोड़ा है स्ट्रेचेबल है शायद 1 घंटा तो जाएगा क्योंकि टर्म्स इतनी सारी है लेकिन रिपीटेटिव है थोड़ा. तो अगर जिनको डाउट्स है तो लिटिल बिट आई विल बी फास्टर. लेकिन कोलेटरल्स अभी समझ में तो आ रहा है ना कि एग्जैक्टली क्या है. इट्स मोर ऑफ लाइक अ सिक्योरिटी ओनली. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन आर बैक. So ये जो है पोलर प्रोसेसेस है वैल्यूएशन Yes, sir. मार्जिन से सब्स्टिट्यूशन है तो हर एक टर्म का वो करना पड़ेगा. just have to have the knowledge. थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए हर एक टर्म का कि उसमें क्या मतलब है. ओके लेट्स स्टार्ट. ठीक है. नाउ प्रोसेसेस इन द कोलेटरल मैनेजमेंट वी हैव सीन. कूपन पेमेंट्स हो सकते हैं. इंटरेस्ट पेमेंट होगा डेफिनेटली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स. डिविडेंड पेमेंट हो सकता है अगर कॉर्पोरेट एक्शंस है तो. इन दैट केस जस्ट अ मिनट. Okay. Corporate actions we have already seen. Splits, reverse split, buyback, spin-off. Payment delays can be there. Accruing interest, accounting, interest charges, capital loss, redemption, and taxes. Now these are the different effects that you need to give from the accounting perspective. Okay. In the client's books. Margin call mechanics, trade to be market to market, collaterals to be marked to the market, net collateral to be calculated internally, credit risk exposure will be there to be a predefined acceptance level. Collateral, net collateral calculations will also be carried out, or margin call is acknowledged over there. Agreed portion of the collateral will be required is posted by the losing entity in the case if the trade is going against them. Now these are just the margin call mechanics which will be used considering different type of transactions which are carried out for all the clients. अब यहाँ पे dispute कहाँ पे आ सकता है? Some of the common, just write first of all common collateral disputes. Okay, write is ineligible collateral, payment delays, valuation disagreement, and portfolio mismatch. Okay, these are common collateral disputes taking place in any of the transactions. Now ineligible collateral क्या होगा? Any securities अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, we have already discussed, अगर गोल्ड मैंने सरेंडर किया लेकिन वो डुप्लीकेट वाला गोल्ड निकला या 18 कैरेट वाला निकला इंस्टेड ऑफ दैट 24 कैरेट गोल्ड, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल्ड कोलेटरल विल बी लेस. In that case, if someone has not actually or accurately measured the value of that gold, it will be difficult और फिर issue हो जाएगा. Second will be payment delays. Payment delay कहाँ पे होगा? जब collateral का इंटरेस्ट पेमेंट्स पार्टी को करना है और टाइम पे उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, then also there will be issues with that counterparty. Valuation disagreement क्या होता है? Prices may be captured at different times from different sources using different price samples. तो valuation disagreement ये होता है कि अगर मैंने अपना खुद का जो प्रॉपर्टी था उसका वैल्यूएशन कैसे भी करके, जो वैल्यूअर आया था बैंक से, ठीक है, तो उसको कैसे भी कुछ करप्शन थ्रू, इफ आई एम इन्फॉर्मिंग यार इसका 20 लाख या 25 लाख का वो वैल्यूएशन कर दो, करते हैं लोग, इफ एनीवन इज अवेयर अबाउट इट, ज्यादा वैल्यूएशन करके दे विल बी ट्राइंग टू गेट मोर लोन्स, right? Now in that case that is known as valuation disagreement. In that case also disputes will be taking place. Then portfolio mismatch. Missing trades are not included in the portfolio
which will be creating more risk exposure and calculation differences. Now this is quite common, especially where the front office has failed to properly enter trades at one of the counterparties. ठीक है, तो पोर्टफोलियो मिसमैच ये होगा कि पोर्टफोलियो का जो भी पर्टिकुलर इश्यूज होंगे इन दैट पर्टिकुलर केस, व्हाट विल बी हैपनिंग एग्जैक्टली ओवर हियर, बेसिकली जो भी वैल्यूएशंस आते हैं पोर्टफोलियो के और कुछ एंट्रीज आपने मेंशन ही नहीं किया क्लाइंट ने, भरत सिबॉक 9, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा स्पेसिफिकली, वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी अगेन. Why? Because few of the entities or entries of that particular stocks you have not entered only in the portfolio, आपने शो ही नहीं किया है, but despite that fact आपका वो क्रेडिट रेटिंग इम्पैक्ट कर सकता था, इसलिए. ठीक है, तो दिस थिंग्स कुड हैपन एंड दिस कैन लीड टू डिस्प्यूट्स फॉर द कोलेटरल. नाउ प्रोसीजर फॉर कोलेटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कोलेटरल वैल्यू यूजिंग मार्केट डेटा, यूजिंग द करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट, करंट इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइसेस, जस्ट टू क्रॉस चेक कि एग्जैक्टली इनका जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा था 75 चल रहा था, लेकिन 70 तो नहीं डाल दिया है. इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा था, 7% तो नहीं डाल दिया है. यू नीड टू क्रॉस चेक ओवर दैट. Ensure credit support annexures are available that will be covering all the details of the underlying security. Annexure जो अटैच किया होगा क्लाइंट का जो एग्रीमेंट है उसमें, in that particularly you need to cross check whether all the details are correctly mentioned or not. Third, verifying net collateral requirements through different thresholds, confirming rounding amounts as per the agreement. Carry out price changes analysis with the collateral to determine the new source of valuation. प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से यू नीड टू रीएडजस्ट द वैल्यूएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. पहले 1 लाख था, फिर 90,000 हो गया, बाद में 1 लाख हो गया वापस, बाद में 80,000, बाद में 1,10,000. कांस्टेंट चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन योर पोर्टफोलियो, यू नीड टू कीप दैट पर्टिकुलरली अपडेटेड. ठीक है, फिर आता है व्हाट आर द प्रोसेस. अगेन वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर कोलेटरल एग्रीमेंट्स. एक्सपोजर मैनेजमेंट होगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ऑप्टिमाइजिंग द कोलेटरल फ्रॉम टाइम टू टाइम. Reference data management, communicating to the client on a regular basis. Write these elements as a part of your job role. What are the important job roles that needs to be performed in collateral management? What are important job roles that needs to be maintained or managed as a part of your collateral management? Job titles risk management probably, sometimes also fund management, but अगर वो शायद front office वाला रोल रहेगा. Fund raising and fund management both. Written everyone this? Okay. Process flow of collateral agreement. Capture the data, validate it, and also crack the deal if required, and then reconcile the portfolio. Valuation and exposure calculation, portfolio margin calculation, margin call matching, calling and managing any disputes if required, settlement and netting, record keeping and regulatory reporting. But important will be these two only, which are two important process flows related to collateral agreement. Then you need to mention about settlement, net effect, record keeping, and regulatory requirement. Okay. Now different terms you will be finding in collateral management. Add-on. Add-on मतलब additional amount that the borrower has to pay to ensure that the MTM value requirements of the underlying security are met. तो वो 50,000 वाला जो example था, 50,000 का loss हो गया, तो that extra 50,000 that top up or add-on are one and the same thing. Okay, उसको बोलते हैं add-on. Call amount, it is the currency amount of collateral which will be requested by the taker. Currency amount of the collateral मतलब जितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है इन अ गिवन करेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट विल बी मेंशन्ड. थर्ड इज द मार्जिन. सो इनिशियल मार्जिन इज द करेंसी अमाउंट दैट मस्ट बी पेड टू एंटर इनटू अ गिवन डील
वेरिएशन मार्जिन कैन बी लेटर पेड टू ऑफसेट द चेंजेस. तो इनिशियली आपको बोला जाएगा एज ऑफ नाउ फर्स्ट मेक द पेमेंट ऑफ 70%, लेटर 30% कैन बी मेड एज पर द ट्रांजेक्शन चेंजेस. फिर आता है मार्जिन कॉल. सो इट इज द डिमांड मेड फॉर एडिशनल कोलेटरल फ्रॉम द काउंटर पार्टी विद नेगेटिव वैल्यू. So that message that we have already discussed, whenever your transaction is already taking place, तो additional margin call करके वो जो message या email आया था stocks की जो बात कर रहे थे, that is the margin call. Mark to market is the currency valuation. Every transaction which will be affecting in a given particular portfolio based on the available trade prices in the open market. Just write this important because MTM will be coming at every way. This is important. Mark to market or mark to margin. Done? Okay. Then comes mark to model. So currency valuation of a trade or a security based on the output of a theoretical pricing. कोई भी सिक्योरिटी को जब थियोरेटिकली प्राइस करते हैं थ्रू डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स, ऑलरेडी एक्सेल में वो मॉडल्स आर ऑलरेडी बिल्ट अप. आई विल बी शेयरिंग वन मॉडल. अगर मेरे पास एक तो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल. किसी को पता है डीसीएफ? इज नॉट अवेयर अबाउट. ओके. कैश फ्लोस क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड. 3 एक्टिविटीज से आता है बैलेंस शीट के टाइम पे. वी हैव डिस्कस इन द क्लास. या ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड दैट. या करेक्ट. नाउ बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर ग्रोथ जो होता है कंपनी का, we will be carrying out that particular aspects, like how this particular company is going to increase their growth or increase that particular valuation based on the cash flows that will be generated. Cash flow definitely gets generated through sales only, and you will be debiting all the expenditures associated with it. Okay, so this is how you will be carrying out all the different valuations. I will be sharing that one particular cash flow model. कैसे 4-5 sheets रहती है Excel में already, then you will be calculating the final values over there. ठीक है. Minimum transfer amount is the lowest amount of currency value which needs to be transferred for the given collateral beneath the given cost, and transfer becomes costlier than the benefits of the collateralization. Multiple transfer करेंगे collateral के लिए, then definitely the borrower के लिए वो cost बढ़ जाएगा. Then net effect is the process of aggregating all the collateral transactions with the counterparty in order to reach a net mark to the given market portfolio value. Net effect मतलब जितना collateral चाहिए था, 50,000 का चाहिए था, तो आई विल बी सेटलिंग डाउन इनटू मल्टीपल ट्रांजेक्शन. से पहले ट्रांजेक्शन में 20,000 ट्रांसफर किया, फिर 10,000 किया, फिर वापस 10,000 किया, लास्ट में 5,000 और 5,000, ऐसे करके 50,000 के 6 इफेक्ट मैंने दिए. नाउ अकाउंटिंग में वो 6 इफेक्ट ग्रॉस वाले दिखेंगे. नेट इफेक्ट एंड ग्रॉस वी हैव सीन. नेट इफेक्ट विल बी 50,000 इज बीइंग ट्रांसफर्ड. प्रॉब्लम एक ही होगा यहाँ पे कि वो चार्जेस एडिशनल हो जाएंगे फॉर द बोरोवर, बट उसका पोजीशन ऐसा होगा क्योंकि वो बोलेगा कि यार अभी तो मैं 20,000 ही ट्रांसफर कर पाऊंगा, बाद में 10,000 के 2 ट्रांजेक्शंस एंड 5,000 के 2 ट्रांजेक्शंस. इट विल हैपन बिकॉज योर अमाउंट विल बी हायर. यहाँ पे हम छोटी वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको लगेगा यार 50,000 ट्रांजेक्शन चेंज करना इतना बड़ी बात नहीं है. ठीक है. वैल्यूएशन परसेंटेज इज अ परसेंटेज अप्लाइड टू द mark to market value of the given collateral which reduces its value for collateralization purposes. It is also known as the haircut. So MTM of the collateral is 100, valuation percentage is 98.5. So 1.5% is charge or 1.5% is your haircut margin over here. Just write it down, valuation percentage and the use of haircut margin over there.
Okay, then comes substitution. You are replacing one form of security with another in the given collateral. So for example, आपने पहले gold deposit किया था, अब उसके बदले में cash deposit कर रहे हो. One and the same thing. और cash की जगह portfolio deposit कर रहे हो. It can happen, but agreement में ऐसा कुछ mention होना चाहिए. Then only it will be allowed. To accept the collateral from a counterparty to meet the collateral margin requirements, that is a take call. Threshold amount is the minimum amount of unsecured credit risk both the counterparties are willing to take before a collateral transaction is made. ये मतलब token amount जैसा होगा, threshold amount. Minimum initial amount which you will be depositing in your collateral account. Rehypothecation is the secondary trading of collateral. Rehypothecation is a cornerstone of the tri-party collateral management. What is hypothecation? किसी ने सुना है? No. तो वही hypothesis हो गया. No. Anyone online? What is hypothecation? Hypothecation is more related. जब आप बैंक में जाते हो, लोन करते हो, किसी ने लोन लिया है क्या बैंक से? Anyone? No one? कोई भी या कुछ आइडिया हो? हाँ, तो वो सिग्नेचर जब करा था तो एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे. हाइपोथिकेशन का कुछ बोला था? बैंक हाइपोथिकेशन करती है. Even today, if you go and buy a two-wheeler loan through a loan, वो हाइपोथिकेशन करते हैं. हाइपोथिकेशन मतलब बैंक will be having the charge of that particular property or the asset unless and until you are not repaying your entire amount. ठीक है, तो तब तक के लिए वो hypothecated रहता है. Okay, that amount is 500 rupees. ऐसा कुछ extra charge लगता है because of the documentation and all those things. That is hypothecation. Potential future exposure, likelihood of a default on a counterparty obligations if exposed to unsecured securities. Annexure we have seen. Collateral support document is an agreement which sets forth all the terms and conditions mentioned for the collateralization purpose. Independent amount is required to offset any of the potential future exposure or any credit risk between margin call calculation periods. मतलब जैसे मान लो कि अगर 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है, हमको पता नहीं है कि वो 50,000 आएगा कि नहीं आएगा. इन द केस अगर 50,000 का ट्रांजेक्शन लॉस तो बाद में होगा ना, अनलेस एंड अनटिल दैट इज अकरिंग. 1 लाख का पहले पोर्टफोलियो था, उसमें 50,000 का लॉस हो जाएगा, वो तो उसको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था. Right now, in that case, you will be keeping 20,000 rupees amount aside in the case if any such event is taking place. ठीक है. Now, different types of collateral agreement: bilateral or bi-party collateral, rehypothecation, and tri-party collateral. So, just write the types of collateral agreement. I'm moving little bit fast because ये थोड़ा theoretical है और easy है, इतना कुछ important नहीं है यहाँ पे. ठीक है, but just write important points for collateral. Okay, now the first form is bilateral or bi-party collateral, which is very old form of collateral relationship. There will be no involvement of any third party. It will be directly between you and your client. If banking is coming in picture or any other intermediary is coming into picture, then only it will be tri-party collateral where third party will be involved. He will be acting as an intermediary, which is a custodian bank in that case, and he is a safekeeper of the collateral. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर आप हो, क्लाइंट वो है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इंटरमीडियरी नहीं होगा. Custodian is the intermediary in the case of a collateral agreement. Please remember that. Don't mix it up with that investment banker. ठीक है, ऑलरेडी आप दो पार्टीज तो हो ही ट्रांजेक्शंस में. Then repo agreements we have seen where one party who is a repo seller who will be selling the securities to another party who is a repo buyer and simultaneously enters into the agreement to repurchase the securities at the later date. So we have seen the case of repo agreements earlier in level 1. Okay, so I'm not going into deeper into that. Rehypothecation is an agreement when the lender of the deal receives marketable collateral from the debtor. The lender may then use and pledge the same collateral for another transaction with another collateral is called rehypothecation. Rehypothecation तब होगा जब same security or same another that particular agreement will be used to have another collateral. ठीक है, दूसरी बार जब होगा ट्रांजेक्शन तब जाके उसको rehypothecation बोलेंगे. पहली बार तो ऐसा ही होगा hypothecation. Additional amount is being surrendered, additional collateral amount is also given. उस टाइम पे उसको बोलेंगे rehypothecation. ठीक है. Now, what are different services provided by tri-party managers? Security lending, escrow account, holding the securities. The tri-party managers can also be custodians over here.
reporting and record keeping, substitution, collateral eligibility testing, margin calls, asset servicing and other trust services. Benefit क्या होगा? Reducing of overhead cost, better technology, core business services, higher trading volume, diversification, no other cost to the lender. मतलब this will be acting more of like a service provider to the borrower and lender कि ये सब चीजें उसको एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा. ठीक है. So just write what is the role of tri-party manager. What is the role of a tri-party manager in collateral management? The question which can come over here. Role of a tri-party manager in collateral management. Right. Now, some of the most prominent tri-party service providers are JP Morgan, BNY Mellon, Deutsche Bank, State Street, Northern Trust. ठीक है. तो यहाँ पे आपका अगर रोल वही आता है collateral management and risk management, then you will be performing all these functions for collateral. ठीक है. Repo agreement we have already seen, two-sided transaction है involving one party selling the securities to a counterparty with an agreed repurchase on the future date. Level 1 का topic है repo agreements, right? तो collateral in repo agreements is issued to mitigate the seller's risk. Credit risk अगर रहता है seller का, अगर वो payment करके अपना security वापस नहीं लेता है, in that case he needs to submit the collateral. Please remember that. Write down the advantages of collateral. We have already seen, but write important advantages of collateral. Reducing credit risk, capital saving, increase competitiveness, improving market liquidity, access to higher risk trade, more efficient trading between the counterparties, and benefits to buy side and sell side. Just go through the collateral topic today, क्योंकि कल शायद वो सॉफ्ट स्किल का लेक्चर है ना आपका. और जिनको सॉफ्ट स्किल के इश्यूज है प्लीज आस्क इन द लेक्चर. जो भी स्पेसिफिक चीजें आपको लग रही है नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश वीक है, ग्रुप डिस्कशन का कोई ऐसा टॉपिक आप ले लेना कल. समथिंग यू कैन डू इट. ठीक है. बट वो भी बोलना है आपको कौशल सबको. विश्वेश नहीं आज क्या हुआ उसको? मेल कर दो एटलीस्ट जो भी एब्सेंट है. ठीक है. फिर भी एक मेल भेज देना उसको बोलना. ठीक है. Disadvantages, of course, increase in the operational risk. Collateralize is complicated. Why? Failure to invest in the correct technology, staff and third-party relationships, and then operating your collateral processes can create additional operational risk. अगर आपने वैल्यूएशन ठीक से नहीं किया है, वैल्यूअर ने गड़बड़ कर दी है, या आपने कोई टेक्नोलॉजीज यूज नहीं की है प्रॉपर्ली टू मेजर द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोलैटरल, then there will be challenges for you. Okay. Legal risk, how to structure, how to document and how to manage all the collateral agreements will require specialized legal risk technologies and trained staff. मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए so that you will be at least come to know about compliance and regulatory procedures. अगर ऑडिटिंग आता है कोलैटरल का, it is going to be very tough. एक एक क्लाइंट का हर एक एंट्री चेक करना पड़ता है, वैल्यूएशन ठीक से है कि नहीं है, मैनेज किया है कि नहीं किया है, ट्रांजैक्शंस मैनेज किया है कि नहीं किया है, एवरीथिंग विल बी क्रॉस चेक. ठीक है. Legal procedures required, perfection risk, recharacterization risk, priority risk. There are several other risk factors which will be having different ways to impact the collateral management. Why? Because either from legal perspective or from operational perspective, these transactions are going to get affected in one or the other way. So it is more important that you go through all the risk factors. इतना difficult नहीं है, technical level पे इतना difficult नहीं है, ये आपका admin level से important है. वहां पे जाके कोई भी आपने एक प्रोसेस फॉलो नहीं किया, गलती से ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो गया, तो यू विल बी एट ब्लेम. ठीक है. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर कोलैटरलाइजेशन भी नहीं करना है. दैट मींस एरर ऑफ रैपिड मार्केट शॉक्स ड्यूरिंग द वैल्यूएशन प्रोसेस कैन लीड टू अंडर और ओवर कोलैटरलाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट लॉसेस. जो केस हमने देखा था लेमन ब्रदर्स का,
ओवर वैल्यूएशन हो गया रियल एस्टेट मार्केट का, और फिर ओवर कोलेटरलाइज हो गया उसमें, एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू. ठीक है. Expensive, the solution is upfront. To outsource the travel will be always expensive. Advantages we have seen: reducing the risk, product innovation, improves return on capital, access to cheaper funds for borrower और lender के benefits लिखे हैं. We have already seen this in level 1. Risk we have written just now: important risk in the collateral, operational risk, settlement risk, market and liquidity risk, concentration and correlation risk, and other legal risk factors. Operational में क्या होगा? अगर if you have not went under proper training, it can lead to other challenges for you. You need to be updated about training manuals, trading instructions, collateral compliance and regulatory measurements. ठीक है, वो होना चाहिए. Documentation: maintaining proper process documents and documents should be accessible to everyone. Most important, ethical code of conduct. Corruption मत कर देना, client बोल देगा इसमें से 10% आपका, आप मेरा प्लीज सेटल कर दो transactions. ऐसा होगा literally. If you are dealing with foreign clients, this is going to be a very much challenging situation for you. समटाइम्स बोलेंगे मेरे लोकल करेंसी में कर दो, मेरी ये करेंसी में कर दो, 2 दिन के बाद मैं एडजस्ट कर देता हूँ, प्लीज थोड़ा देख लो, ये सब देख लो, ये आएगा पूरा. और आपका फिर वही चैलेंज आता है वहां पे कि कैसे भी करके कोड ऑफ एथिक्स ब्रीच मत करना. ठीक है. You need to use your technologies properly through level of automation mentioned. Avoid manual intervention wherever possible. Same manual errors can happen. That's why. ठीक है. Any doubt so far in this? कि समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, एवरीथिंग क्लियर? कौन सा चीज समझ में नहीं आया तो फिर? कि बहुत थियरी है इसलिए पढ़ने के लिए बोरिंग हो रहा है? हाँ, कहाँ पे? Concentration risk and Service management is the organization of okay, concentration and correlation risk. Okay, now see, this is risk management and collateralization. Concentration risk will be occurring specifically if that given portfolio or your given underlying security for collateral will be concentrated into one particular asset class, either gold or you have invested your entire portfolio into, say for example, Reliance stocks. तो प्रॉब्लम क्या होगा? बाकी सब चलता होगा अच्छी तरीके से, लेकिन आपने हेवीली इन्वेस्ट यहाँ पे कर दिया है और आपका कोलेटरल भी वही है, then it is going to be very much difficult for the counterparty or the lender कि यार इसको फिर मतलब बाहर कैसे निकाले. अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन होता पोर्टफोलियो में, then it could have been much better. So correlation is also that same thing. If you are correlating your entire portfolio with one asset class मतलब पूरा concentration एक ही जगह पे है, then it is going to be very much difficult for any lender to at least get back his money back. ठीक है? The concentration has to be less in that case. See, collateral agreement is bound to face concentration risk when in a particular counterparty has not diversified its portfolio. ठीक है? When a particular collateral is rehypothecated and traded in another market, there is correlation risk. Such risk can be avoided by using concentration limits also. These are limits. Limit मतलब आपको ये बोलना है कि maximum if you are investing or providing me gold, तो gold का मैं सिर्फ 30% ही लूंगा, बाकी 70% please provide me another asset class or another securities. 20% इक्विटी पोर्टफोलियो ले लो, 30% ये ले लो, बाकी 50% बॉन्ड का पोर्टफोलियो ले लो. गेटिंग द पॉइंट? आपको 1 लाख ऐसे स्ट्रक्चर करना है, पूरा का पूरा 1 लाख गोल्ड ही ले लोगे और गोल्ड के प्राइस अगर कल डूब गए पानी में, ऐसी सिचुएशन आ गई, then it is going to be difficult for you. Clear? So there has to be limits set for each and every asset class which will be taken as a collateral. Clear? Online students, any doubt? कि सब कुछ क्लियर है? No, sir. ओके. अच्छा, उमेश भी ऑनलाइन है क्या? हाँ सर, आज मैं ऑनलाइन अटेंड कर. क्या हुआ? हाँ सर, कुछ नहीं सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इसलिए तबीयत ऑनलाइन. सबका गिर रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, कल से मैं कहाँ पे जाके आए हो? कहीं नहीं सर. ओके.
ठीक है. So if I'm asking how concentration and correlation risk are affecting a given particular collateral transaction or agreement, तो आपको यहाँ पे ये बोलना है. Otherwise, rest other factors are very layman language में भी explain कर दोगे ना चलेगा. Legal risk है तो you can definitely mention कि what type of legal risk can be there. Legal entities are different, accounting aspects are different, or jurisdiction are different. So in that case, it will be affecting the entire transactions. लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कंसंट्रेशन एंड कोरिलेशन रिस्क. ठीक है. Portfolio margining, it is focusing on the demand side of the collateral management. You need to calculate the margin requirements in such a manner that offsetting risk will be reduced. Offsetting मतलब portfolio को regularly you need to keep on checking and managing the risk level. It is not exposed to a very high beta risk type of stocks. वो पता है ना high beta stocks कि नहीं पता है किसी को? Okay, write the question. What are high beta stocks? What are high beta stocks? So now we are left with only then reconciliation, external, internal. We will be checking on the basics and we will be then determining कैसे settlement होता है, कैसे पहले थोड़ा accounting reconciliation जिनको आता है, please next lecture में थोड़ा prepare करके आना. We will be first understanding the basics and then we will check all the reconciliation. Yeah, normal account reconciliation जो normal करते हैं वही है. But यहाँ पे वही एक चीज होगा कि नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन की जगह आपका पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन आएगा, बस दैट्स इट. एंड दैट फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल सिक्योरिटीज. कभी इक्विटी स्टॉक का आएगा, कभी कोई दूसरा बॉन्ड मार्केट का बॉन्ड लिया हुआ है तो उसका सेटल करना है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट, उसका एक्रूड इंटरेस्ट डिले हुआ है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइफ साइकिल एसोसिएटेड विद दैट रिकंसिलिएशन. सो ऑल दोस थिंग्स कमिंग. रिकंसिलिएशन फ्रेमवर्क क्या होता है, बस वही एक चीज बाकी है. रेस्ट ऑल थिंग्स आर कवर्ड. ये इफेक्ट कैसे देते हैं, सी दिस एग्जांपल इज आल्सो वन गिवन ओवर हियर. ठीक है. Now what could be the risk factors if reconciliation is not performed? Cash management over there, that is important. ये इशू किया हुआ है तो जर्नल एंट्री कैसे होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सिटी, और दूसरा काउंटर पार्टी है तो डीबी बैंक ऑफ फ्रैंकफर्ट. ठीक है. तो दोनों का इंटरनल लेजर कैसे मेंटेन होता है, बस वही है रिकंसिलिएशन. आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन डन इन योर अकाउंट्स. थोड़ा बहुत तो किया होगा किसी ने, बस दैट्स इट. और कुछ नहीं है यहाँ पे. बस दैट्स द लास्ट टॉपिक लेफ्ट इन लेवल 2. एनी डाउट्स एनीवन? सब कुछ क्लियर है सबको? प्लीज आज घर पे जाके एटलीस्ट कोलैटरल थोड़ा एक बार देख लेना. एनी डाउट्स? व्हाट अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस एंड आईबीसी स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है. एवरीवन इज मैंडेटरी टू राइट आंसर्स इन द ग्रुप. कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए वहां पे. ठीक है. टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स फॉर यू, मैक्सिमम हाफ एन आवर. इतना टाइम निकाल सकते हो. ठीक है. चलो. Okay, done for the day. Online students clear with this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आईबीसी स्ट्रक्चर क्लियर है ना सबको? Yes, sir. किसी को अभी भी रिलेटेड वो डाउट है? आज हनान भी नहीं आया क्या? Mamta, you were absent yesterday, right? Mail.
समीक्षा का क्या वापस हुआ? विनय कल नहीं आए थे क्यों? मेल प्लीज, मेल जिनको जो भी एब्सेंस है प्लीज मेल। ट्रेनिंग चाहिए तो अतुल से ले लो, उसने बहुत बार मेल कर लिया है मुझे। ठीक है। सी लाइव सब्सक्रिप्शन यू कैन सी राइट नाउ। अभी आज के फर्स्ट डे पे अभी इतना फिल हुआ है LIC IPO। QIP अभी स्टार्ट नहीं है। रिटेल में जितना गया, एम्प्लॉय में इतना गया, पॉलिसी ऑर्डर में इतना है, 0.25 टाइम्स ही हुआ है अभी तो। अगर ये 1 को क्रॉस कर रहा है आज शाम तक, कल शाम तक, देन डेफिनेटली वन शुड टेक अ चांस। ठीक है, लाइव डेटा आपको मिलेगा। आज तो डे 1 है अभी, एंड पीपल विल बी एक्साइटेड लाइक पेटीएम ओनली। LIC तो बहुत ट्रस्टवर्दी नेम है इसलिए। Yeah, any other doubts? When company declares their dividend and gives dividend to shareholders, so why the stock price decreases? दो चीजें, थोड़ा इफेक्ट आता है, उतना प्रॉफिट कम होता है कंपनी का। कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं नहीं नहीं, रिजर्व्स में से नहीं आता है वो। नहीं नहीं, रिजर्व्स में से नहीं आता है। नो, Bonus is from reserve. नो, बोनस इज आल्सो नॉट फ्रॉम द रिजर्व्स। प्रॉफिट हाँ जो भी होता है उसमें से ही निकलता है उतना, लेकिन उतना प्रॉफिट कम हो गया ना कंपनी का। फिर अगर 100 CR था, 40 CR का डिविडेंड दे दिया सबको, तो 60 CR बचा। तो प्राइस तो फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा रिफ्लेक्चुएट होगा ना, क्योंकि आपका पहले ग्रोथ 100 CR के हिसाब से जा रहा था, अभी 60 CR के हिसाब से ही जाएगा। थोड़ा स्लो हो जाएगा ग्रोथ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो वापस रीएडजस्ट हो जाता है धीरे धीरे प्राइस, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, 1-2 महीने में हो जाता है। या एनी अदर? हाँ, ओके, चलो वी आर डन देन। थैंक यू। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 2। अभी तो एक ही हफ्ता बचा है मॉक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को है ना मॉक्स? हाँ, ट्यूसडे 10th कब है? हाँ, यस ट्यूसडे।
तो शेड्यूल कर देंगे, क्योंकि बाद में क्या है फिर पूरे वीक में वो लेवल 3 भी खत्म कर देंगे, उसके बाद आपका फाइनल मॉक बस हो गया। और टाइम में 3 दिन का छुट्टी तो आ रहा है ना बाद में, और कल भी एक छुट्टी है आपका सॉफ्ट स्किल्स का, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तुम क्या करना है देख लेते हैं, चलो लेट्स सी कि आपका फ्राइडे को कैसे चल रहा है, वी विल सी देन। लेकिन अभी ऐसा ही मान के चलो कि 10th को ही है एज ऑफ नाउ, चेंज होगा देन आई विल इन्फॉर्म। मगअप नहीं करना है, थोड़ा कंसेप्ट वाइज ही थोड़ा चल के जाओ, इसलिए तो थोड़े क्वेश्चंस आई विल स्टार्ट पुटिंग फ्रॉम टुडे, उस हिसाब से स्टार्ट प्रिपेयरिंग। Before mocks, can we have some refreshers? इसमें रिफ्रेशर रख सकते हैं, बट इसमें रिफ्रेशर रखने का आई विल बी, रिफ्रेशर है आई नो दैट, प्रॉब्लम इज कि सी आपको चाहिए तो आई विल डेफिनेटली शेड्यूल इट, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या रखना है उसमें रिवीजन के लिए, दैट इज माय कंसर्न इज। हाँ Level 1, level 2 both. नहीं लेवल 1 कांट बी डन इन द रिफ्रेशर, वो लेवल 2 का ही होगा। हाँ हाँ यस चलो हाँ ठीक है, पोस्ट कर दो व्हाट्सएप पे, अगर सबको चाहिए जो भी मेजोरिटी होगा वी विल देन डू इट, अदरवाइज आई विल रादर सजेस्ट कि यू गो फॉर 4 आवर्स वहां पे कंट्रीब्यूट करने के वजह यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर ऐसा होगा देन आई विल व्हाट बेस्ट आई कैन मेक इज 11 एक डेट और एक्सटेंड कर सकता हूँ जस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, नॉट मोर देन दैट, 10 का 11 को रख सकते हैं बस दैट्स इट। तो फिर भी आपको कितना, सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे 4 डेज यू आर स्टिल गेटिंग फॉर प्रिपरेशंस। अब 4 दिन लेवल 2 के लिए तो बहुत है मेरे ख्याल से, कितना पढ़ोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए बस दैट्स इट, इसमें ज्यादा डेफिनेशंस आई वोंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस मत लो ज्यादा, जहाँ पे है आई विल बी कीप पोस्टिंग द क्वेश्चंस टिल फ्राइडे, एटलीस्ट आई विल ट्राई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके क्वेश्चंस, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो क्वेश्चंस ही पूछ रहा हूँ फिर, ठीक है। L2 L1 के हाँ वो दिखा नहीं रहा है ना वो हाँ वाई बिकॉज यू वर इन दैट अदर बैच, और शायद वो टेक्निकल एरर है तो इसलिए वो मेल के हिसाब से हाँ, तो एक बार एक आप उत्कर्षा को मेल डालो, ठीक है, बाकी सबके हो गए हैं इसलिए। बट आपको याद है क्लास को नहीं क्योंकि इतने सारे, क्योंकि मैंने 3 बैचेस के अभी ले लिए मैंने, ठीक है 9 10 हाँ यस आज करो, थैंक यू। आपका अभी ले लेते हैं, ठीक है ना, चलो हाँ कभी एक टास्क खत्म हो जाए, आप ही शायद आपका ही बाकी है। ठीक है हाँ हाँ वही वही मैं पोस्ट कर